भारत, जहां विचार केवल कहे नहीं जाते, जिए जाते हैं। 15 दिनों की इस यात्रा में हमने देखा विचारों का मंथन, नेतृत्व का संकल्प और राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ते ठोस कदम। हर संवाद में था एक भविष्य, हर कदम में था एक उद्देश्य, और यहीं से शुरू हुई नई सोच की यात्रा, नए भारत की यात्रा। Lights, camera, action. हेलो के नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सबाई के। नमस्कार। Hello everyone. Hi, my name is Vivek Padera from South Africa. This is Pallavi Kaushik from New Delhi. मुस्कान अग्रवाल। I belong to Raigad, Chhattisgarh. हर्षवर्धन वशिष्ठ। I'm Lohita. My name is Anurag. I'm Charan Ponamgi from Hyderabad. I'm Arya Zamburkar. माझं नाव आर्या कारखाने, नागपूर महाराष्ट्रातून आहे. दीपक राखड़े. I am from Maharashtra. I am बलजीत यादव. यशिता जैन। I am from New Delhi. साधना वैष्णव मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आती हूँ. मेरा नाम आयुष्मान त्रिपाठी है. Zananya. I hail from Prayagraj, Uttar Pradesh. Mahesh from IT Roorkee. अभिनव गुप्ता. My name is Abhay. I'm from Maharashtra. My name is Saniha. Sushima Dubey. Currently studying at University of Delhi. আমার নাম মাধুর্য তরফদার, জন্মভূমি কলকাতা, কর্মভূমি ইজ হরিয়ানা। আমার নাম হলো ঋতিকা মিশ্রা। আমার জন্মটা হয়েছে দেওয়ারিয়া উত্তর প্রদেশে। My name is Sananda Sinha. I'm from NIT Silchar. Namaste, good morning. Vilupuram to Vladivostok. There is one common unusual thing between both of them, and that is our alumni. One is a district collector working at the Grassroots Foundation of Governance and Public Leadership, while the other is the 14th Consul General of India to Russia there. With over 2,000 alumni in the last decade, we proudly say that our community is Sarvasparshi. Welcome to India's oldest, most prestigious and impactful public policy training program, the Policy Bootcamp. Over the course of next 15 days, you will meet and learn from some of India's finest minds, most influential leaders and inspiring change makers. It is now my absolute honor to welcome our chief guest, Yasim Arunji. Brief background: a former IPS officer and now a Minister of State in the Uttar Pradesh government. Thank you very much. Very warm welcome to all the participants. I will concentrate two things. What is our idea of Viksit Bharat? And second, how are we going to achieve that? Thank you very much, Sabiko. It's my privilege to declare the boot camp open. Please have a great time, enjoy, learn, contribute. Thank you. Day 1 को लग रहा था कि मैं कई सारे सेशंस अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, I was very lost. फर्स्ट डे माझ्यासाठी खूप नर्वस होता. पहिल्या 2 दिवशी तर मला काहीच नाही कळणार. My mother was a bit scared, so Saurabh sir came to the rescue and he actually reassured her. जब मैं लोगों से कनेक्ट किया, टीम से कनेक्ट किया, रास्ता देखा जहाँ मैं इक्वली पार्टिसिपेट करके बूट कैंप को मैं अटेंड कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट भी मिला. पण थर्ड डे पासून मला थोडं कळायला लागलं आणि आता very much confident. But as we move forward, I see there is always a connecting dot. As I was moving, so I was having the confidence. I was the youngest in the cohort. The first day, I've had quite a lot of political opinions. It was interesting to learn about. Most interesting thing that I saw here, there are a lot of students who are still pursuing their graduation. कोहॉर्ट तो बहुत ही डायनामिक है. लॉ बैकग्राउंड है उनका, कोई कंसल्टेंसी से है, मैनेजमेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. I realized that public policy was not just limited to a certain domain. Someone as a policy consultant to the Haryana government and so many people are running think tanks and NGOs. Wow, it was so amazing कि आप ऐसे दिग्गज लोगों के साथ सीख रहे हो. डिनर में आप अलग टॉपिक सुनते हो, लंच में अलग टॉपिक सुनते हो. अलग-अलग भाषाओं से होने के बाद इस राष्ट्रम के मंच में जो एक राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को जो हम खुलकर बयान कर रहे हैं, वन नेशन वन आइडेंटिटी. The primary job of the government should be policy making. Day 1 से लेके we had so many speakers from different domains. When you think of public policy, think around yourself. You follow many regulations. Public policy is not only about the government. Public policy is about all of us. Hard work and discipline is at the heart of every nation's development effort. For me, the best one was Mr. Apurv Mishra. Apurv Mishra. Shri Apurv Mishra ji. Absolutely loved the session of Apurv Mishra. The way he explained the amendments in the constitution. What affects a policy? How policy is formulated? How policy briefing are done? He integrated constitutional law and history
and politics of today in actually an hour or so. जिस तरह से कनेक्ट किया चीज़ों को, इनफैक्ट पॉलिटिकल चीज़ें और पॉलिसी का जो इंटरलिंकिंग है. And it made me feel that this is exactly why I've come for policy bootcamp. One thing I remember from a session which stuck with me was that democracy is the rule of numbers that is tempered by the law. It is not the free will of the people. You have to look at the numbers and you have to see how the law affects the numbers. For me, IAS Prince Dhawan. सेशन को जब उन्होंने लीड किया तो त्यांची जे थिंकिंग होती त्यांनी जे अल्टरनेटिव्ह थिंकिंग आम्हाला दिली. How we can use the public policy, what we can do to make it better, and what are the bad policies that we should avoid. So the session by Rahul Ahluwalia ji, that intellectually challenged me a lot. The way he explained capitalism and socialism, I got my concepts quite clear. He kept audience on their toes. Everything was very lively. Really like Neerja Chaudhary's ma'am session. I अब आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? उन्होंने बोला था कि सच्चा होना ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात है और वही उन्हें इंस्पायर करता है. She answered our every question very deep. Rajiv Kumar, he was the person who gave reality check what kind of problems we are facing. श्री अनिर्बन गांगुली जी का जो हमारा सेशन था, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो काफी इम्पोर्टेंट लगा. पर्सनल फेवरेट तो AI इन लॉ था. इस तरीके से मैं AI मॉडल्स को यूज कर सकता हूँ इतने बैकलॉग्स बने हुए हैं सॉल्व करने के लिए. He covered those arenas like what are the reasons कि policy fails होते हैं. भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है. सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं और इस पॉलिसी बूट कैंप में भी उसका जीता जाता उदाहरण देखने को मिला. बूट कैंप में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग राज्य के लोग आके एक ही विषय पे बात कर रहे हैं, वो है राष्ट्र सर्वोपरि. हर एक सेशन अलग इमोशन लेकर आ रहा था. Across PBC, every speaker was incredible. No doubt about it. 7 से 8 दिन का जो जर्नी हुआ है कोविड का, एनरिचिंग था और मल्टीपल एक्सपीरियंस के साथ था. And I'm looking forward to the remaining 9 days as well. Thank you.